Good morning, student. Today we are going to start your new chapter, that is a flowchart and algorithms. What is a flowchart and algorithm in computer language? Algorithm. So the algorithm is a step-by-step instruction written in a simple English language to perform a specific task that is known as algorithm. The first step is generating a computer program is to understand the problem and put down the step in a sequence to get the result. Suppose I told you that please solve a mathematical problem that is 2 plus 3. Then what you will do, you just write 2, then put the sign of plus, and then you will write 3, and then you will press the equal sign, and then you will find out the result, that is 5. Okay, so that is a just like an algorithm which is you have to be used in your daily life also. Suppose I told you to make a project in Word or Excel or PowerPoint in anything program. Then you just open your computer, just open the program, and just write the activity or task which I assigned to you. Then you just send to me. So all the procedure, that is a sequence of steps, so that is known as the algorithm. So just we are writing in the English language the process, that is step by step process, and that is known as algorithm. सपोज आपका डेली रूटीन जो है वो भी आपका एक एल्गोरिथम है. आप डेली उठेंगे, देन यू विल अटेंड द क्लास, देन यू विल गो टू द study, then you will go to the just on rest, then you will go to the playing, and then after you just take doing your dinner, and then you go to the bed. So all this is just process in your daily life, that is known as the algorithm. Okay, so I think you will understand what is the algorithm. So that is a step by step process which is in English language, and it is also used in our real life, just like uh, just मैं आपको बताता हूँ how we will prepare a tea. So what will be the algorithm of the prepare a tea? First you will take a cup of water in a pan, and then you will just crush the ginger and put into the pan, and the sugar, tea powder, and boil for 3 to 5 minutes. And after that you will just pour a cup of milk into it, and just boil for a 2 to 5 minutes. Okay, so that is a procedure, and after that you will just filter all the solid and enjoy the tea. So that is a step by step process to making a tea, and the step 1 to 5 is used for making a tea. Okay, so that is algorithm. If you write anything in the step by step process, suppose मैंने आपको बोला कि अगर आप लिफ्ट में ट्रैवल करेंगे तो उसका स्टेप्स क्या होंगे, उसके एल्गोरिथम क्या होंगे, then you just press the button for the left, the left will become to you, the door will be open, you just move into it, and then you will choose the floor which you want to be gone, and the door will, and the left is departure you at the particular floor. So all these things are the algorithm for using the left, and I hope you will understand what is the meaning of algorithm. Okay, so what is the advantages of an algorithm? That is very uh, useful in the computer, that is too easy to understand your problem, and then you will just implement and modify it. All are independent of any computer language. Okay, so अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, एंड देन उस प्लानिंग को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई करके फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं. ओके, सो दैट इज़ अ प्रोसीजर. सो एक उसका एक एडवांटेज है. ठीक है, and they are independent of any computer language. They can be easily converted into the flowcharts and then into the computer programs. So that is for use of algorithm. अब इसके रूल्स क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं. व्हाट इज द रूल फॉर राइटिंग द एल्गोरिथम? एल्गोरिथम मस्ट बी बिगन विथ स्टार्ट. एक सर्कल आएगा और सर्कल के अंदर हम लोग लिखते हैं स्टार्ट, एंड then the number of
statement which we use just like in step 1 2 3 and last. Okay, and then write the statement clearly, and then after that you just separate all the steps, and then you will finish this. And the rule at the last, you will use the stop for the at the end of the algorithm. Okay, just like I'm just showing with the example, that is algorithm of add three number, then you will use three numerical values just like an uh, 1 2 3. Okay, so first step is just you will take the starts, and then you will take the three numbers, and in step third you will add all three numbers and then print the result, and at the last you just stop the process. So that is the example of using of an algorithm for adding a three number. अगर मैं आपको दो नंबर ऐड करने के लिए बोलता हूँ तो आप कौन से दो नंबर ऐड करेंगे, दैट इज a plus b. Okay, and and then after adding you will just print on the screen, and then you will just stop the process of the algorithm. So that is a procedure for using the algorithm. Next, and the find the smaller number. अगर आपके पास दो नंबर है और एक को आपको स्मॉलर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा प्रोसेस, फर्स्ट यू विल टेक द स्टार्ट, then you will take two numbers, that is x and y. Compare the number with, if x is smaller than y, then the x is smaller, otherwise the y will be smaller. So thus in step 4 you will just print the result which is smaller, just like if x is smaller is x, if x is not smaller then y is smaller, and in the last step that is stop your process. Okay, so that is the procedure for finding the smallest number. I hope you will understand. Okay, next is flowchart. What is a flowchart? So flowchart is just like an illustration things uh, that is a step by step process. ठीक है, जैसे हम लोग एल्गोरिथम में क्या कर रहे थे कि हम उसको स्टेप्स को लिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग उसको एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, उस डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे उस एल्गोरिथम को. तो अगर आप डायग्राम यूज़ कर रहे हैं उसको एल्गोरिथम को लिखने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लो चार्ट. So first you will writing the algorithm flow charts, you have know all the things which is that is symbol, and which symbol is used to represent a specific thing in a flow chart. Okay, so the graphical form में, अगर आप पिक्टोरियल फॉर्म में अगर किसी सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लो चार्ट. ठीक है, तो उसके सिम्बल्स कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं. फर्स्ट आपका सिंबल है, दैट इज स्टार्ट. ओके, सो दैट इज, मैंने इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है. ओके, सो दैट इज सिंबल, दैट इज सर्कल. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट जो है, जैसे आप लोगों ने देखा था अभी, जैसे मैंने आपको तीन नंबर ऐड करने के लिए बोला था, तो पहला स्टेप क्या था, स्टार्ट. ठीक है, तो उस स्टार्ट को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज विल बी द ओवल, नॉट अ सर्कल, दैट इज ओवल. ओके, एंड द स्टार्ट और एंड जो है वो दोनों एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो द बोथ सिंबल आर द सेम for the start and stop the writing the flow charts. And then you will just write the process box, that is a rectangular box. If you suppose add two numbers, three number, if you divide a number, if you multiply a number, so that is a processing. Okay, and the processing is represent in the rectangular box. So that is a use of rectangular box, and that is called the process box. And then the input box and output box, that is a parallelogram, shows the input and output of the data. And the fourth one is decision box. Decision box means, जैसे सपोज आपके पास दो नंबर है और दोनों में से आपको ग्रेटर या फिर स्मॉलर फाइंड आउट करना है, देन यू विल यूज द डिसीजन बॉक्स. ओके, सपोज x नहीं है तो फिर y होगा, और y है तो x नहीं होगा. ओके, सो दैट इज अ डिसीजन बॉक्स, and that is in the form of diamond. Okay, so that is a decision box. Next one is flow lines. Flow lines which the direction of the instruction in a flow chart. ठीक है, चार होते हैं नेविगेशन की, तो चार फ्लो लाइन्स है. सिक्स है आपका कनेक्टर. कनेक्टर में क्या होता है, जितने भी जो बॉक्स अभी मैंने आपको दिखा है, रेक्टेंगुलर, ओवल, डायमंड, ठीक है, तो ये सब आपस में किससे कनेक्ट होते हैं, फ्लो लाइन से. ओके, नेक्स्ट है आपका कनेक्टर. कनेक्टर क्या करता है, सर्कल को, जस्ट लाइक एन सर्कल इज यूज टू कनेक्ट द वेरियस सेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट, एंड दैट इज
कनेक्टर, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे. Okay, so that is a use of flowchart and algorithm in our daily life. So I hope you will understand today's lecture, and we will discuss also in the live session. So thank you so much, and please आप इस chapter को एक बार फिर से read करिएगा. You will understand very easily, and the other part of the chapter we will do in the next class. So thank you so much. Have a nice day.